Okay, so coming back to our topics, we were covering building blocks of Nest.js. तो हमने cover कर लिया controller, module, services we have covered. Let me highlight all these things which we have covered. Controller हो गया, right? Controller is nothing but a router. Module जिसमें हम सारी चीज़ें encapsulate करके रख रहे हैं, which contains export, controllers, providers, or inputs. Services we have covered, like how to create a simple ES6 class with injectable annotation, और फिर उसको you can inject that service anywhere inside a controller, inside another service, or maybe another service of another module. ठीक है. Middleware that we have covered recently, middleware and auth guard, these two topics together. Middleware and auth guard. तो हमने middleware में क्या किया? User logs in and we were mocking the authentication service. We were checking कि user is sending authorization header or not. अगर send कर रहा है तो ठीक है, नहीं है तो unauthorized भेज रहे थे. If user is sending some token in the authorization, then we were mocking user service and setting some parameters like role in user object, request.user object. उसको हम guard के अंदर validate कर रहे थे कि अगर user का role admin आएगा then allow access for that particular route, तो that was guard. Middleware we have covered, guard we have covered. Confusion यहाँ होता है. Pipes is nothing but a validation pipes like a parse and pipe, parse float pipe, parse boolean, or we are writing custom DTOs for the request payload validation. अब आप request payload में आप query parameter, path parameter, request body ये सब validate कर सकते हो through validation pipe. ठीक है, यहाँ पे ये मोस्टली इंपॉर्टेंट यही है, how you can validate your request payload using validation pipe. अब बात करते हैं एक्सेप्शन फिल्टर, इंटरसेप्टर. बिकॉज कस्टम डेकोरेटर की ये समझ लो कि जैसे आपने @controller, @injectable, @module, तो these definitions are already created in Nest.js. बट अगर कुछ नया मुझे बनाना है लाइक @user, @exception manager और @logger, तो उसके लिए मुझे कस्टम डेकोरेटर लिखना पड़ेगा. Nest.js इज फ्लेक्सिबल इनफ दैट प्रोवाइड्स अस ऑल दीज ऑप्शंस. ठीक है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में. तो बाद में के लिए आपने छोड़ा प्रोवाइडर और कस्टम डेकोरेटर. प्रोवाइडर वी विल कवर बिकॉज इट हैज़ मल्टीपल स्कोप्स inside providers array, how in what different ways we can actually declare the service using use class, use factory, use alias, different things. थोड़ा ये हाई लेवल भी है, समझ में आता है, थोड़ा लेट. तो उसके साथ अब हम बात करते हैं इंटरसेप्टर और एक्सेप्शन फिल्टर्स. अब फ्रॉम द नेम इट इज़ क्लियर, एक्सेप्शन फिल्टर्स और इंटरसेप्टर. Interceptor is something which is going to intercept your request and response. Exception filter is something kind of like which can catch the exception thrown from your APIs and you want to do some custom dealings on top of that. तो एग्जाम्पल से समझते हैं दोनों क्या क्या है. तो पहले हम बात करते हैं एक्सेप्शन फिल्टर. क्योंकि एक्सेप्शन फिल्टर क्या है, अभी आप एक्सप्रेस की बात करो तो वी वर यूज टू हैव एरर हैंडलर मिडलवेयर. तो आप कुछ भी एरर थ्रो करो लाइक पेड रिक्वेस्ट, अनप्रोसेसेबल एंटिटी एक्सेप्शन, इंटरनल सर्वर एक्सेप्शन, अनऑथराइज्ड, फॉरबिडन और नॉट फाउंड. तो दैट मिडलवेयर यूज टू हैंडल ऑल दोज रिक्वेस्ट और उसको यूजर को कस्टम मैसेज हम थ्रो करते थे कि भाई दिस इज द स्टेटस कोड, दिस इज द एरर कोड और ये मैसेज है. सिमिलरली फ्रॉम हियर एंड देयर इन द Nest.js code you might be sending some exceptions like unauthorized exception. Now you might be wondering how Nest.js is handling this exception because it's being thrown from the middleware. अगर मैं टोकन पास नहीं करूँगा मिडलवेयर के अंदर, इट विल डायरेक्टली सेंड मी अनऑथराइज्ड एक्सेप्शन. एक्सप्रेस में तो ये हैंडल नहीं हो सकता बिकॉज एक्सप्रेस डजंट नो व्हाट टू डू विद दिस एक्सेप्शन, बट Nest.js इट्स इंटरनल Nest.js एक्सेप्शन. तो हमें स्टेटस कोड जो भी सब चीज़ें हैं, ऑल द थिंग्स विच Nest.js विल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड. तो व्हाट अदर थिंग्स वी कैन डू instead of, let's say I'm doing this, what I can do is I can just throw any custom exception like there is a HTTP exception class also. I think couple of arguments we need to pass: response, status and error message and all, something like this. I remember HTTP exception, unauthorized जो भी आपको मैसेज ऐड करना है, string और status code. रेस्ट इट विल डील विद दिस ऑटोमेटिकली. ठीक है, कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी हो सकते हैं जो कि यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस हो, लाइक यू आर क्रिएटिंग अ यूजर एंड यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट. तो यू वांट टू सेंड अ मैसेज नॉट लाइक 409 कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन. यू वांट टू गिव अ मैसेज ऑल्सो दैट यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस एंड आई एम सेंडिंग यू द स्टेटस कोड 409. तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक लेट्स से आई एम गोइंग टू क्रिएट एक्सेप्शंस फोल्डर हियर
और यहाँ पे मैं all exceptions I'm going to document here. So let's say user conflict exception.ts maybe, whatever the name you want. और यहाँ पे मैं like you already know how to extend error class, right? So export class user. So this is what I'm creating a custom exception. Conflict exception. This is like this is only just a part one of exception filter, and it should extends HTTP exception. Okay, then you can simply do constructor, and inside this I think you can just call a super parent class constructor with conflict and HTTP status dot it's 409 conflict. Okay, so what you did, I mean आपको JavaScript में पता होगा, you can just simply create a error class something like this, export class extends error class. ऐसे हम JavaScript में बना देते हैं, वैसे ही Nest.js में कि आपने extend कर लिया HTTP exception, so this exception you can throw. I'm not looking at the place and not writing code, so I'm just putting something here, HTTP user conflict exception. तो इस तरह से आप custom exceptions भी बना सकते हो. The only thing is you need to extend the HTTP exception. ठीक है, so this is how I can create custom exception. But what is exception filter? Exception filter is something which is going to handle all these kind of exceptions which are being thrown through HTTP exception. So from documentation we can get a simple sample like what is exception filter. HTTP exception filter, so we can add here inside a filters folder. I will just create exception dot filter dot ts. इसके अंदर if you look into the code what we are doing, I'm trying to catch HTTP exception. Okay, you can catch any additional exception also, but what I'm saying is my whole application is going to throw only HTTP exception or some other class which are extending HTTP exception. तो ठीक है, I'm catching HTTP exception and all the things will be captured here. अब इसके अंदर मैंने क्या किया, कभी कभी क्या होता है आपको डिटेल्ड एरर मैसेज देना होता है, स्टेटस को, टाइम स्टैम्प, what who was the client requesting date, what was the path URL, timestamp, status code, lots of information when you are throwing an exception, some custom error code, something like that, right? तो यहाँ तो HTTP exception filter बनाया and it has to implement this exception filter. उसके बाद आप कैच करोगे all the exceptions which are being thrown using HTTP exception. तो हमने दो चीज़ की. Step 1, either create a custom exception or throw any HTTP exception. Like either you can just simply do HTTP exception or any other exception extending HTTP exception, and then define exception filter class simply by using @catch annotation. Then there is a step 3. I told you that in Nest.js you can actually do lots of things at the controller level, at the method level, or sometimes even at the global level, right? So I will talk about that. Maybe there is a domain and inside this task controller I want to use this exception filter only for one particular route. Use filter, HTTP exception filter, add all missing import, or no, not like this. I mean, it's better to add this because this is something which can be global, right? So we can use filters, HTTP exception filter. Then I changed my mind. No, not like that. I can have it at the application level because this is what I'm going to use everywhere. I think is यहाँ पे अपन use करेंगे app.set global interceptor. What is the name? Let me recall it. Use global filter, because you see use global filter, guard interceptor, तो global filter डाल देंगे हम. और यहाँ पे हमें class instantiate करनी पड़ेगी उस particular की. तो व्हाट हैज चेंज्ड, क्या चेंज हुआ इससे? कुछ चेंज नहीं हुआ. ये HTTP एक्सेप्शन फिल्टर ग्लोबल होल एप्लीकेशन पे अप्लाई हो गया. अब जब भी आप कोई भी एक्सेप्शन थ्रो करते हो कहीं से भी, मिडलवेयर, कंट्रोलर, सर्विसेज, this will come into the picture and it will provide you some detailed status code. That's it.
So exception filter is just filtering some exceptions and handling based on the code you have written. It is filtering HTTP exception before sending it to the client and then just doing some logic on top of that. Let's see this in action. So one good thing is after having this Swagger integrated, we don't need a REST API client. I can open this Swagger right away from the same 3012. और देखो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया, हिट किया इसको, and I'm not passing anything here. This is empty. I mean, I'm just obviously I'm throwing a wrong exception status code. That's just for demo. If you're not passing token, I'm just throwing some exception and it is falling to the HTTP exception filter. यहाँ पे आ रहा है simple. Where is that? Inside a core. And it is just throwing me what is status code, date, request URL. यहाँ पे आप status code change कर सकते हो. You can just simply do HTTP unauthorized exception. So here you can see 401 unauthorized. So this is what you will get. I'm just throwing unauthorized exception, and this is also extending HTTP exception. So it will be handled automatically like this. Okay, ये तो है exception filter. And now the next thing we are going to talk about is an interceptor in the next video. Exception filter should be clear, I think now. It's a like very basic thing. You can write your own custom exceptions, extending HTTP exceptions, and then you can throw them anywhere. The only thing is if you are writing this exception filter, you will get a detailed status code, timestamp or custom error codes you can define. All those things you can do here.